Now in this video we will discuss about 8th standard history's first chapter, how, when and where. Okay, dear student, previous video we have discussed introduction and this chapter and what we learn about in this chapter. Okay, now in this video start the step by step. Okay, so now how, when and where means this times which event have a finish or begin, then where and when, these are the questions answer we finding in this history. Okay, so how important are the dates? So there was a time when historians were fascinated with dates, means are the historians, you know these times means 1000 years before, okay, or once upon a time. Okay, this you reading any newspaper or any book, okay, your textbook आप read करते हो once upon a time, like this are one emperor have, one queen have, okay, one territory have, okay, one kingdoms have, this finish. But this information where we get, or where this historian are get information about 1000 years बिफोर, उनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है? सो हैव सम हिस्टोरिकल मटेरियल्स, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सम टैग्स, written text. This information he get information. Some are the archaeologists are finding some evidences. Okay, so there was a time when historians were fascinated with dates. There were hearted debate about the date on which rurals were crowned or battle were fight. So उसमें क्या हो जाता था, उनमें ही डिफरेंस रहता था. वन हिस्टोरियंस सेकंड हिस्टोरियंस क्या हो जाता था, उनमें ही डिफरेंस रहता था. Which type difference? Some are saying no, this is event have finished at exact date. Suppose example 5 अगस्त को one day one event हो गया, बट दूसरा हिस्टोरियंस क्या कहता था, नहीं ये तो 10 अगस्त को हो गया. थर्ड क्या कहता था, नहीं ये 15 अगस्त को हो गया. दे हैव अ डिफरेंस, दैट्स व्हाई दे हैव अ डेबिट फ्रॉम सम हिस्टोरियंस. उनमें क्या हो जाता था, वो डेबिट हो जाता था. क्लियरिटी दिस डेट नॉट हैव, उसके डेट में वो क्लियरिटी नहीं रहती थी अबाउट डेट और विच रूरल्स वेयर क्राउडेड और बैटल्स वेयर फाउंड. मींस कब वो रूरल्स ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया था और कब वो बैटल्स हुआ था. दे हैव नॉट अ फिक्स. सो इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्रीज वाज अ सिनोनिमस विद डेट्स. तो क्या है द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स, दे हैव अ हिस्ट्री हैव दिस means we can discuss or we histories this time we learn now then this histories which have our past है. हमारा past हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं. our future is not in histories, हमारा future नहीं रहेगा हिस्ट्री में. क्या रहेगा, सिर्फ हमारा past means yesterday's that before means 1 minute before जो भी हो गया वो क्या है, हमारा हिस्ट्री ही है. Okay, so this common sense notion histories was synonymous with date. You may have heard people say I find history boring because it is all about memorizing date. In such a conceptions are true. Okay, so this what that's why you saying no history subject is a too much a boring subject. No, but history is a too much a nice subject. Why? Because we understanding our past, our before generations, which type are living, which type are was doing our daily life, ये हमें समझ में आती तो हम उससे क्या लेते हैं, हम द मोरल ऑफ हिज लिविंग लाइफ, हमें उससे क्या लेना है, वो कैसे जीते थे. which type he was doing a hard work, he was have a totally hard life है, तो कैसे जीते वो हमें क्या लेना है, उनसे लेना है. सो इट अबाउट मेमोराइजिंग, ये क्या है, अबाउट हमारा मेमोराइजिंग करना पड़ता है, हमारे ब्रेन पर प्रेशराइज करना पड़ता है, तो हमें क्या हो जाता है, वो क्लियरिटी क्लियर हो जाता है. इज सच अ कंसेप्शन ट्रू. ओके, हिस्ट्री इज अ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम्स. इट इज अबाउट फाइंडिंग out how things were in the past and how things have
change. Okay, history is are not the same one time in this. You also day by day have changed. Means yesterday's you were doing that, before you were doing totally changed. No, suppose only we have taken example yesterday. yesterday आपने क्या किया था? ओके, आपने कुछ अलग वर्क किया होगा, हाँ, ये आप बता सकोगे. आपने yesterday कुछ अलग डिश खाई होगी, ओके, ये आप बता सकते हो. That before year, 1 year before you what are doing? Yes, you are saying yes. मैं पिछले साल 7th स्टैंडर्ड में था, अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ. अगेन वन, पिछले ईयर हमें एसएसटी के टीचर ए थे, अब एसएसटी के टीचर ए. मैं पिछली बार साइंस को ए थे, अभी ए. यहाँ यू सेइंग क्लियरली. बट 1000 years बिफोर, ये तो हमारा एज नहीं है 1000 का, तो हम किधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? सम आर द रिटन मटेरियल. ओके, बट दिस हिस्ट्री इज अ सर्टेनिटी अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, कंटिन्यूअसली चेंज. दैट्स व्हाई आवर हिस्टोरिकल period have divided 3 parts, okay, which have ancient, medieval and modern period. So it about the finding out how things were in the past and how things have changed. means हमारे पास में कौन से things थे उस टाइम, किस टाइप्स के पीपल्स अपना लाइफ जीते थे, आप कैसे जीते थे. उस टाइम तो मोबाइल नहीं था, रेडियो नहीं था, ना अपना लैपटॉप, कुछ भी नहीं था. उस टाइम तो टोटली दे हैव डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट. सो कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, देन नाउ वी कंपेयर. हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटली चेंज. अभी हमें देखो, हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा क्लॉथ चाहिए, रहने के लिए अच्छा घर चाहिए. तो उस टाइम पीपल क्या करते थे? जिधर भी मिले, जिधर भी उनको मिला खाना, वो क्या करते थे? खाना खाते थे. मीसा, फ्रूट, सारा, दोज आर थिंग्स आर अवेलेबल ऑन नेचर फॉरेस्ट. वो क्या करते थे? वो खाते थे. आज लिव्स ऑन इन caves. So present we refer to times we talk about before and after. So we compare before क्या था and after which time. Then again you example is you compare your first standard, second standard, you look your first standard, second standard picture. उस टाइम का पिक्चर देखो और अभी का पिक्चर आपका देखो, मीन्स फोटो देखो. टोटली आर चेंजेस. यस, हाँ, आप छोटे थे तब आपका फोटो और अभी का फोटो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगेन वन, यूर हैंड राइटिंग इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड और फोर्थ स्टैंडर्ड की जो नोटबुक आपको देखो, आपकी देखो, एंड अभी का हैंड राइटिंग देखो. दिस आल्सो आर चेंज. ओके, सो दिस पार्ट आर बिफोर एंड आफ्टर. So now next one, living in the world we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Okay, so some of the living in the world we do not always ask historical questions. मीन जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हो गए, हाँ, उसको हम क्या करेंगे? ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, बट टास्किंग नहीं, चेंज नहीं कर सकते हम. अभी जो हो गया तो क्या वो फिक्स हो गया. वी टेक थिंग्स ऑफ ग्रांटेड एज if what we see has always been in the world of we inhabit in the world inhabit. But most of this have our moments of wonder. But what have our moments of wonder? हम क्या करते हैं? अभी एक जगह पर अभी सेटल है, बट उस टाइम तो पीपल वन प्लेस पर सेटल नहीं थे. वो कंटिन्यूसली क्या करते थे? और ट्रैवल करते थे. सो व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, watching someone sip a cup of tea at a roadside tea shop, you may wonder. क्या आपको क्यूरियस लगता था कि अरे उस टाइम तो अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ अवेलेबल है. हम किधर भी जाते हैं, टी हम चाय भी पीना तो किधर भी वो अवेलेबल रहती है. होटल में जाएंगे, चाय पीते हैं. Okay, so when did people began to drink tea or coffee looking out of the window of a train? You may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to be here about this
before newspaper began to be printed. Okay, so these are the some of the newspaper or some of the event trends. Okay, so now have some metro trains or some railways. Okay, so that before 100 years before, in suppose now 2020s and 1920s is also have railway some countries. Okay, and India also have. Okay, but this time railways are not developed, but now have too much developed railways. Okay, then again one a newspaper now also printed have, and this time also have printed have. So these are some of the information we get. Then we are understanding a fixed time. So how important are date, तो कब क्या हुआ था ये हमें पता चलता है. Now look at this picture. Okay, what are this figure? Okay, what we understanding this figure? Brahmans offering the Chatra. Okay, so Britain front space of the first map produced by the James Renal. Okay, so what we understanding this picture? This you writing some words. ये आपको ये पिक्चर में आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ये क्या करना है आपको 2-3 लाइन्स में राइट करना है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो we discuss about only how importance are a date. Okay, so now next video we discuss next part of this histories. Okay, now your work part write some words this picture and read the chapter.